बोध गया। बिहार के गया जिले में वो पवित्र स्थान जहां सैकड़ों साल पहले शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर तय किया। पूरी दुनिया में फैले तमाम बौद्ध अनुयायियों के लिए ये जगह आज भी आस्था और अटूट भक्ति का केंद्र है। हर साल देश विदेश से लाखों बौद्ध अनुयायी और दूसरे धर्म के धर्मावलंबी इस जगह पर आकर सुख और शांति की राह अपनाते हैं। बौद्ध और दूसरे धर्मावलंबियों की इसी आस्था को देखते हुए बिहार सरकार ने 27 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बौद्ध धर्मावलंबियों को सौगात दी। ये सौगात है पटना में रेलवे स्टेशन के सामने 22 एकड़ में फैले बुद्ध स्मृति पार्क की। 125 करोड़ रुपए से बनाए गए इस पार्क का उद्घाटन परम पावन दलाई लामा ने किया। पार्क के उद्घाटन के अवसर पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ दुनिया भर के धर्मगुरु और अनुयायी भी शामिल हुए। परम पावन दलाई लामा ने इस बुद्ध पार्क को नाम दिया पाटलिपुत्र करुणा स्तूप। आइए दिखाते हैं हम आपको इस पार्क का सुंदर नजारा। पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाते इस स्तूप की ऊंचाई 200 फुट है। स्तूप में लगे ग्लास इसकी आभा को और बढ़ा देते हैं। इस स्तूप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 5 देशों श्रीलंका, म्यांमार, जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। परम पावन दलाई लामा ने परम पावन 13वें दलाई लामा से मिले बुद्ध के अवशेष को भी यहीं स्थापित कर दिया। पूरी दुनिया में ये एक ऐसा इकलौता पार्क है जहां इतने देशों से भगवान बुद्ध के अवशेष लाकर रखे गए हैं। 5 देशों से लाकर भगवान बुद्ध की यहाँ पर स्थापित की गई मूर्तियां पार्क की शोभा को और बढ़ा देती हैं। पार्क के एक हिस्से में स्थित है बौद्ध संस्कृति से रूबरू कराता ये संग्रहालय। संग्रहालय में बौद्ध दर्शन और धर्म से जुड़ी पुस्तकों के अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम सामग्रियों को एकत्रित किया गया है। पार्क के इस हिस्से में मेडिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसमें 5 ब्लॉक और 60 कमरे हैं। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जब आप यहाँ बैठें तो ऐसा आभास हो कि आप तिब्बती मंदिर में ही बैठे हुए हैं। तिब्बती मंदिरों की भांति यहाँ पर जलने वाली मोमबत्तियां माहौल को और भक्तिमय बना देती हैं। बोधि वृक्ष यानी वो वृक्ष जिसके नीचे तपस्या कर भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। पार्क में श्रीलंका और बोध गया से बोधि वृक्ष की शाखा को लाकर उसका वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण का ये पवित्र कार्य संपन्न हुआ परम पावन दलाई लामा के कर कमलों से। भगवान बुद्ध के अमूल्य धरोहरों को सहेजे इस पाटलिपुत्र करुणा स्तूप को अब आम जनों के लिए भी खोल दिया गया है। इस पार्क का निर्माण भगवान बुद्ध के 2555वें महापरिनिर्वाण वर्ष की यादों के रूप में किया गया है। आपने सुना है वैदिक ज्योतिष के बारे में, आपने सुना है पश्चिमी ज्योतिष के बारे में। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों की ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर सेरिंग छांजुम से। Tashidele, Namaskar. 11 June 2010, 29th day of the 4th lunar month, Friday, which is an elemental combination of earth and fire, which is said to be inauspicious combination, the combination which has the tendency to bring burning energy to generate suffering. This day in general is good for the person born in the year of sheep, bird, monkey, a horse, snake,
while it is a bad day for the person born in the year of tiger and rabbit. This day is also a day of sojong, which it is for the purifying sin by making confession to their spiritual leaders. And on this day, no feast aim for the deceased. 12 June 2010, 30th day of the 4th lunar month, Saturday, with the elemental combination of earth and fire, which is inauspicious, and the combination of such elements has burning energy to generate suffering. And from 6:36 a.m. we have a new elemental combination of earth, which is very auspicious, and this combination has wish fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. And this day is particularly good for the person born in the year of ox, tiger, rabbit, while inauspicious for the person born in the year of mouse, pig. And this day has a special combination called Tupjor, and during this day it is inauspicious. Although it is good for any kind of activities, but it is inauspicious to let son, daughter, grandson or granddaughter to go abroad or to move to any other places. 13 June 2010, first day of the 5th lunar month, Sunday, which has the elemental combination of fire and wind, considered auspicious, and this elemental composition has powerful energy to bring auspiciousness, and this day is especially auspicious or favorable for the person born in the year of dragon. And on this particular day, it is inauspicious to invite any guest home. We will see you tomorrow at the same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति? कैसे पाए बुद्धत्व? क्या है धम्मम? क्या है संघम? ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान परम पावन दलाई लामा से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। Firstly, I think the importance of calm mind. I think two things, because of two benefit from calm mind. Number one is a calm mind brings inner peace. That also very helpful to maintain the healthy body. And then calm mind, another calm mind, I think immense sort of helpful to function about our human intelligence, to investigate, to analyze the reality. Without calm mind,
disturbed mind then cannot see the reality properly. Because disturbed mind then often develop biased sort of view. And often then you see things appears actually mental projection. When we develop anger, and then the object which we develop anger, our anger focusing, you see, that appears very negative. But the 90% of that negativeness is actually mental projection. So similarly, too much attachment. Again, the positive sort of appearance from that object, again, I think a large portion mental projection. So as soon as the mental projection is involved, you can't see the reality. So calm mind, I think two things. The benefits from calm mind, two things. Person himself, herself, with calm mind, much of peace, happier. And the physical body element also function normally. And then most important, that provides the proper functioning of our brain, and we can see the thing more objectively, like that. So now, irrespective of whether believer or non-believer, I think worthwhile make some other effort to bring calm mind. Then our life, of course, some form of problem, some form of trouble, including one's own body's sort of imbalance, creation, and what is creation, like old age or illness, and finally death is bound to happen. Then environment also, there are a lot of problems. So under such circumstances, if there is a way to keep calm mind, then worthwhile make attempt. So now how to bring calm mind? I think we have to look the real sort of source of disturbances. Right? One, extreme self-centered attitude. Right? Self-grasping. That also is one source, create disturbances. More grasping, I. They say, more possibility, disturbances. Little loose way. That's too much sort of center, sort of, because of the grasping attitude, less disturbances. Disturbances happen, but the response from your side much softer. So there, it seems faith, according to the theistic religion, is a belief creator, God. So, single-pointed sort of faith towards God, creator. So that means your total submission, right? Total submission to the God. So that loosening, this extreme self-centered sort of grasping attitude. That's one way. Then Buddhist way of approach. Is of course, like Jainism and Buddhism,
and also one ancient Sankhya philosophy, one part of Sankhya philosophy. Hello? No concept of creator, but ultimately oneself consider creator, like that. So you should do, therefore, law of causality, law of karma. Everything depends on one's own action. Action here, physical action, verbal action, mental action. So due to one's own action, the different sort of result come. Pain, pleasure, neutral. So now here, Buddhism, the emphasis, concept of anatma. So that is the aiming, loosening the tight sort of, or grasping self. I. So all major religious tradition, you see, aiming, or I think recognize, openly or unopenly, indirectly, I think realize one source of the problem is self-grasping, strong I. So you utilize different sort of method to reduce that. Then another way, more sense of concern of others' also well-being. That also sort of very, very sort of strong sort of method to reduce also the self-grasping. Self-grasping, not necessarily just feeling of I. I is there. But you see, the too much sort of the self-centered attitude, it often you see bring an attitude regardless others' well-being, and then extreme way in order to get some benefit to oneself, bully on other, harm on other, cheating other. So more compassionate attitude, respect others' right, respect others' desire. So more sort of sense of that kind reduce the dangerous self-centered attitude. When we say selflessness, does not mean the denying existence of self. Self is there. But you see, and also you see, it is necessary to keep the sense of strong self. Is necessary. Sense of strong self is the basis of willpower, determination, self-confidence. Without that, life becomes difficult. And also, from the spiritual viewpoint, the spiritual progress also then difficult without a sense of strong self.